if there is a decreased temperature in your body will increase. If there is a increased body temperature in your body, then normally your body will try to decrease it by either vasodilation or by increasing the production of your sweat. We have seen this. We have seen the classification also. We have seen the classification also. We have seen the this salicylic acid and its derivative. We have seen about the pharmacology of salicylates. Then we have seen the adverse effect of salicylate in the details. I have already explained you about the salicylates. Okay. We have seen the use also. Other NSIDs, I already finished this paracetamol also, but I will start from this. So I will take this paracetamol again. Let me know once, am I audible you clearly and are you able to see the screen properly? Screen this time, screen. So paracetamol, other NSIDs, we have seen the salicylates. So after that, as we have seen different classes of NSAIDs are there. So one of the class is nothing but the one of the drug is nothing but the paracetamol. So out of that, other NSAID, first drug is nothing but the paracetamol. Paracetamol, it was a first effective analgesic antibiotic. And before this paracetamol, there was a one drug. There was a one drug known as a phenacetin. So this phenacetin was first developed. Okay, it is nothing but the para-ethoxy acetanilide, para-ethoxy, you can say para-astoxy acetamidol, that is a phenacetin. Now it was later observed that this phenacetin was a prodrug. It was a prodrug, and after the metabolism of this phenacetin, there is a generation of one active metabolite, and the name of active metabolite is nothing but the paracetamol. You can say this phenacetin is a prodrug of paracetamol, or you can say paracetamol is an active metabolite of phenacetin. So there are another prodrug known as benoyrelate. Benoyrelate is also a prodrug for paracetamol, and benoyrelate is also prodrug for salicylate. As compared to aspirin, aspirin we have seen. So as compared to aspirin, it has a weak activity on prostaglandin synthesis. So it is a weak COX inhibitor. So it is a very weak inhibitor of COX in the peripheral tissue. So that's why this paracetamol has a weak anti-inflammatory activity. There is one more reason why this paracetamol has a weak anti-inflammatory activity. इसको और एक reason होता है, I will explain that. But as it is a weak inhibitor of COX, so it has a weak anti-inflammatory activity. As compared to salicylate, this drug has a less adverse effect. For example, salicylate has an anti-platelet action. Salicylate was able to produce respiratory alkalosis, metabolic acidosis. So this drug, they will not alter any metabolic process. It will not produce any kind of alkalosis or acidosis. So and also it is a better tolerate. Okay. So in the inflamed tissue, also there is a high concentration of peroxide. जहाँ पे inflammation होता है ना, वहाँ पे peroxide का concentration बहुत ज़्यादा होता है. So in the inflamed tissue, there is a higher level of peroxide. So this peroxide inactivates this paracetamol. Paracetamol is ineffective in case of inflammation, or you can say paracetamol is a weak anti-inflammatory drug. Why? Already it has a less activity against the COX, and also it get ineffective in presence of this peroxide. तो जो भी इन्फ्लेमेशन होता है वो आप peroxide का लेवल बढ़ जाता है टिश्यू में, और वो peroxide में पैरासिटामोल क्या होता है, इनइफेक्टिव होता है. पहले ही इसको वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब क्यों है, एक तो पहला रीजन है कि इट इज अ वीक कॉक्स इनहिबिटर, so it is has a weak activity for inhibition of prostaglandins. Second, in case of inflamed tissue, there is a higher level of peroxide and it makes paracetamol ineffective. Okay. Okay. But however, it blocks COX effectively in the brain. So it is selective COX-3 inhibitor in the brain. Okay. Remember, selective COX-3 inhibitor. Selective COX-3 inhibitor in the brain that is responsible for the its antibiotic effect. Therefore, paracetamol is a potent antibiotic and analgesic, and it has a weak anti-inflammatory activity. Aspirin in therapeutic doses devoid of significant anti-inflammatory activity. In routine drug therapy, in routine it is used. Sorry, paracetamol किसको use करते हैं? So paracetamol is routinely used for antibiotic and analgesic activity.
पैरासिटामोल इज नथिंग बट द डीइथाइलेटेड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फेनास्टीन। फेनास्टीन जो है उसका डीइथाइलेटेड एक्टिव मेटाबोलाइट कौन है? पैरासिटामोल। इट इज अ डीइथाइलेटेड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फेनास्टीन। क्योंकि फेनास्टीन में क्या है कि पैरासिटामोल क्या है? पैरा एसिटामिडोफेनॉल। ठीक है, एक इसमें क्या है? CO एन, ओके, NH COO CH3 ऐसा है एसिटामिडो। ठीक है, और बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो पैरा एसिटामिडोफेनॉल, इट इज अ पैरासिटामोल। लेकिन ये फेनास्टीन में क्या है कि फिनॉल की जगह ना यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप है, OC2H5। दैट्स व्हाई इट इज अ डीइथाइलेटेड। वो रिमूव किया है इथाइल तो बन जाएगा डीइथाइलेटेड। तो डीइथाइलेटेड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पैरासिटामोल, सॉरी डीइथाइलेटेड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फेनास्टीन। पैरासिटामोल इज अ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फेनास्टीन। एडवर्स रिएक्शन क्या है इसके? So it is a better tolerated in a normal therapeutic dose. It does not harm you at all. Okay. So, but in a toxic doses or in a higher doses, say for example, we want 6 gram per day. We want 5 gram or 6 gram per day. 7 to 10 gram. That is a lethal dose. 7 to 10 gram is a lethal dose. Okay. So now in this dose, it produces the extensive hepatocellular damage. Hepatic cell को damage करता है. Okay. And also causes the renal tubular necrosis. So in the dose of 7 to 10 gram or beyond the 6 gram per day, this paracetamol causes the hepatic necrosis and tubular necrosis, renal tubular, मतलब ये हेपेटोटॉक्सिटी भी करता है, किडनी टॉक्सिटी भी करता है, किसमें? हायर डोज में। ओके, रियरली इट प्रोड्यूसेस द एनीमिया, एनीमिया बहुत कम बार करता है एंड रिजल्ट इन द hemolysis in individual with the glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. So liver toxicity occurs with a very high or large dose due to one toxic metabolite. Now this paracetamol is metabolized by two reactions that I have already explained you yesterday. So first reaction is a glucouronide conjugation. So 60% of this paracetamol is eliminated from body by glucouronide conjugation, and remaining 40% is removed from the body by glutathione conjugation. Okay. Now, during the metabolism of this paracetamol, there is a generation of one toxic metabolite known as the N-acetyl para-aminobenzoquinone imine. N-acetyl para-aminobenzoquinone imine. ये मेटाबोलाइट याद रखो, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका. N-acetyl para-aminobenzoquinone imine. That metabolite is generated when you take paracetamol beyond 6 gram per day, and that react with the sulfhydryl groups. Sulfhydryl group मतलब ESH groups that react with the sulfhydryl groups of the protein present in the liver and enzyme present in the liver and causes damage to the liver. Okay, so if there is a damage, if there is toxicity of this dose, okay, normally also this metabolite is generated. Okay, normal dose कितना होता है? 500 milligram to 1 gram. So in that dose also this paracetamol metabolite N-acetyl para-aminobenzoquinone imine, so that is also generated, but that generated in a less quantity or in a very less amount. Now that less amount is easily excreted from your body by glutathione conjugation. Okay. Now if you take paracetamol in a larger doses, 7 to 10 gram per day, so at that time there is generation of higher quantity of this metabolite, and in that condition your body's glutathione conjugation is decreased, because glutathione conjugation is a saturable process, it is an active process and you have limited storage of glutathione. So that's why if there is an increased dose, there is a generation of this metabolite. Okay, and if that metabolite is generated in a more amount, so that extra remainder, some part of that metabolite will be conjugated with the glutathione. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये मेटाबोलाइट बन गया है. ठीक है, आपकी बॉडी में एक ग्लूटाथायोन है, तो ग्लूटाथायोन आपका कुछ ना कुछ अमाउंट उसका कॉन्जुगेट करके रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में ही बना है मेटाबोलाइट, तो वो रिमेनिंग मेटाबोलाइट क्या करेगा? लिवर के सेल के साथ में रिएक्ट होकर वहाँ पे हेपेटोटॉक्सिटी करेगा. नाउ in case of hepatotoxicity, N-acetylcysteine is nothing but the antidote. Second one is a methionine. Both are the sulfur containing amino acids. So you should know what we mean by sulfur containing amino acids. दो तीन टाइप के होते हैं, कितने होते हैं? तीन. There are 3 sulfur containing amino acids. देखो यहाँ पे पहला होता है आपका सिस्टीन.
दूसरा होता है सिस्टाइन, दूसरा होता है मिथ्योनिन. Cysteine, cysteine and methionine. So in the cysteine there is a sulfhydryl group. In the cysteine there is a disulfide bond. In the methionine there is thioether. So these three are the amino acids known as sulfur containing amino acid. You have to remember. तीन होता है, कितना होता है? तीन. Cysteine, okay, then cysteine and methionine. So cysteine में sulfhydryl group होता है, cysteine में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और मिथ्योनिन में थायोईथर बॉन्ड होता है. उसके फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है. So this cysteine and methionine, they are known as the antidote for paracetamol poisoning. Okay. Second होता है pyrazolone derivative. The example is aminopyrin, antipyrin, phenylbutazone, oxybenzone. So phenyl dimethylpyrazolone. It is analgin. Phenylbutazone is a potent anti-inflammatory drug, but it is rarely used because of its adverse effect. Adverse effect में क्या है? GIT में ulceration करेगा, hepatic renal and hematological toxicity. Hematological में आता है, it causes the bone marrow suppression, so aplastic anemia. Also it causes the Stevenson-Johnson syndrome. So oxybenzone क्या है? Oxybenzone is the active metabolite of phenylbutazone. Indole derivative में क्या आता है? Indomethacin. It is an anti-inflammatory, antipyretic as well as analgesic activity. Okay. It is used in the arthritis and rheumatoid arthritis and gout, so to prevent the acute attack of gout. In case of joint swelling, it will bring down the swelling as well as inflammation in the joint. So indomethacin, most of these drug जो NSAID होते हैं वो analgesic होते हैं, antibiotic होते हैं, antiplatelet होते हैं, ठीक है, and uricosuric होते हैं, याद रखना है. So indomethacin along with indomethacin and aspirin, they are used to close the that ductus arteriosus. Adverse effect का होता है frontal leg. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Adverse effect of indomethacin is frontal leg. बाकी ऑलरेडी आपने देखा है, blurring of vision, depression, psychotic disturbances, mental confusion, and because of this property, it produces the mental confusion. Okay, and blurring of vision, depression, and psychotic disturbances. That's why it is contraindicated in case of machine operators, drivers, and psychic patients and patient of epilepsy. It is also contraindicated in the pregnant woman. It is used for the gout and alkalizing spondylitis. Alkalizing spondylitis क्या होता है? Rheumatoid arthritis का ही type होता है. It is a type of rheumatoid arthritis where there is a pain, inflammation, and swelling of your bones, like backbone mostly. Spondylitis होता है. Sulindac is nothing but the fluorinated derivative of indomethacin, and it is a prodrug and longer acting. So ये क्या है? Indole acetic acid derivative कौन है? Indomethacin क्या है? Indole acetic acid derivative. Sulindac is also fluorinated derivative. Are you getting? Are you getting or not? समझ रहा है आपको? या अभी थोड़ा सा और ज़्यादा. So heterocyclic aryl acetic acid derivative. So in that you have diclofenac. इसके क्लास के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है. It is a heterocyclic aryl acetic acid derivative. Aryl मतलब क्या? Phenyl ring. Acetic acid derivative. ठीक है. Now it has a greater activity than indomethacin, naproxen, and other NSAIDs. Okay. It is a preferential COX-2 inhibitor. याद रखना है, preferential COX-2 inhibitor. So adverse reaction include gastric irritation, diarrhea, dizziness, headache, skin rashes, and blood dyscharesis. Sometimes it may produce a bleeding, gastric bleeding. ये acidity बढ़ाता है. It irritates your GIT and it increases the gastric acidity. Mainly used in the treatment of rheumatoid arthritis, severe osteoarthritis, and all type of spondylitis. उसका derivative होता है aceclofenac. So it is a highly selective COX-2 inhibitor. एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन है. Highly selective COX-2 inhibitor is aceclofenac. Okay. Now it is converted into active metabolite known as a 4-hydroxyaceclofenac. Now in case of diclofenac, as diclofenac causes gastric irritation, ये diclofenac जो है ना, gastric irritation करता है. That's why most of the time it is given with the either ranitidine or it is given along with the pantoprazole or omeprazole. So it is always prescribed with the anti-secretory agent, diclofenac. But this aceclofenac will not produce acidity.
that's why aceclofenac alone can be given. And instead of producing acidity, this aceclofenac has opposite action. The diclofenac acidity करता है, it can produce ulcer, but this aceclofenac is highly selective COX inhibitor, and it increases the cytoprotective hexamine level in the stomach. ये अल्सर की बजाय प्रोटेक्शन करने वाला जो hexamine होता है उसका लेवल बढ़ाता है, and that's why aceclofenac does not need antacids along with that, or does not need antisecretory. नेक्स्ट आता है आपको कीटोरोलैक. कीटोरोलैक इज इफेक्टिव एज मॉर्फिन इन द सर्जिकल chronic pain, surgical chronic cancer pain. Like other NSAID, it also inhibit the prostaglandins and also inhibit the platelet aggregation as a less anti-inflammatory action. It is an analgesic anti-inflammatory. Next आता है tolmetin. So again it's the aryl acetic acid derivative similar to ibuprofen and its action and side effect are same. आप याद रखना है most of the NSAIDs they are racemic mixture. Most of the NSAIDs they are a racemic mixture. ये क्या है racemic mixture होती है. Analgin again it causes the agranulocytosis and indomethacin. Indomethacin diclofenac okay can cause aplastic anemia. Okay. Analgin can cause agranulocytosis. Diclofenac and indomethacin can cause aplastic anemia. फिनाइल प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव, तो इसको बोलते हैं फिनाइल प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं प्रोपेंस प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, फिनाइल प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव. So in that you have ibuprofen, naproxen, phenopropin, flurbiprofen, ketoprofen. They have analgesic, antibiotic, and anti-inflammatory activity similar to aspirin, but they have a less side effect and better tolerated. So only naproxen is only सिंगल इन एंशूमर. नेप्रोक्सेन ही क्या होता है, एक सिंगल इन एंशूमर है, बाकी जितने भी ड्रग है दे आर अ रैसमिक मिक्सचर. एडवर्स रिएक्शन क्या आएंगे, मैकेनिज्म तो वही होगा, इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स सबका. जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, epigastric pain, nausea, sensation of fullness in the stomach, heartburn, used in the rheumatoid arthritis, osteoarthritis and ankylosing spondylitis. बाद में इसमें joint pain, joint and soft tissue pain, पोस्ट सर्जिकल ऑपरेटिव पेन, बाद में पोस्ट फ्रैक्चर ऑपरेटिव पेन, ये कॉमन यूज है. टूथ एक्सट्रैक्शन, ये भी एक कॉमन यूज है. आउट ऑफ दैट फ्लोर्बिप्रोपेन इज अ ऑक्यूलर एंटी इंफ्लेमेटरी अवेलेबल इन द आई ड्रॉप. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है. फ्लोर्बिप्रोपेन इज अ फ्लोरिनेटेड प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव, इज यूज्ड एज अ ऑक्यूलर एंटी इंफ्लेमेटरी. ठीक है. अभी जो कंजक्टिवाइटिस का एपिडेमिक आ चुका था, उसमें भी फ्लोर्बिप्रोपेन यूज किया था बहुत सारे डॉक्टर ने, और उसमें एंटीबायोटिक यूज किए मोस्टली सिप्रोफ्लॉक्स आई ड्रॉप. ibuprofen is the most tolerated in this category. Other NSAIDs, so next is a phenamate or phenamic acid derivative. Phenamates or phenamic acid derivative. So in that you have mefenamic acid and clophenamic acid. So out of that mefenamic acid is an anthranic acid derivative useful in the chronic itching pain. Mostly it is used for the abnormal menstrual bleeding known as a dysmenorrhea. Abnormal menstrual bleeding is known as a dysmenorrhea. Abnormal menstrual bleeding को बोलते हैं dysmenorrhea. Used for both clophenamic acid and mefenamic acid. They are used for the dysmenorrhea and amenorrhea. Okay. You might have seen one tablet known as a Meptal Spas. Meptal Spas नाम का एक tablet है, Meptal Spas. गर्ल्स के पास में होता है ये साइक्लोफॉर्म और ये Meptal Spas. So used in the dysmenorrhea. Other actions are similar to aspirin. Next class है आपका oxycams. So in that paroxycam, tanoxycam, meloxicam, lornoxicam. So all these are there. So out of that, this meloxicam comes under the preferential COX inhibitor. Adverse reactions are similar like above. Gastric ulcer करेगा. You can produce gastric ulcers. Now next class is nothing but the selective COX-2 inhibitor. Selective COX-2 inhibitor. Am I audible? आवाज येते का? In the selective COX-2 inhibitor, these drugs are nothing but the COX-6. Okay. So preferential COX-2 inhibitor कौन सा थे?
They are like Nimesulide is preferential COX-2 inhibitor, Meloxicam is there, Naprometin is there. Naprometin क्या होता है? Is a prodrug, okay, and it is converted into active metabolite 6-methoxy 2-naphthalenic acid. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें मेरे सेशंस में भी, ठीक है. सो याद रखो Nimesulide, Diclofenac, Meloxicam, Naprometin, these are the preferential COX-2 inhibitor. So out of that, Naprometin is a prodrug. All are used as a analgesic, anti-inflammatory and antipyretic. Okay. So out of that, Naprometin is converted to active metabolite known as a 6-methoxy 2-naphthalenic acid. Okay. 6-MNA. Then selective COX-2 inhibitors, they are nothing but coxic. Okay. Celecoxib, Raficoxib, Valdecoxib, Itrocoxib, okay, Paracoxib. These are the drugs. Okay. Okay. Last two drugs, that means Raficoxib and Valdecoxib. Out of that, Raficoxib or Refocoxib we will discuss. So this is the most potent among the COX-2 inhibitors. Refocoxib is the most potent. Okay. Refocoxib is the most potent. Valdecoxib. Okay. They are a highly selective COX-2 inhibitor and longer acting. They are used as an analgesic, anti-inflammatory in the osteoarthritis, rheumatoid arthritis. Okay. There are a lot of drugs under this category. There are a lot of drugs, example of drug under this rate COX-2 inhibitor, but only few drugs are used in the therapeutics. There is a reason. These COX-2 inhibitors, they have an adverse effect. They causes the coagulation of blood. There is the formation of thrombus that leads to myocardial infarction, that leads to stroke. So some of these COX-2 inhibitor, they produces the myocardial infarction, they produces the angina pectoris, they produces the arrhythmia. Okay. So this particularly Valdecoxib, it is banned. Valdecoxib is banned due to it produces the arrhythmia known as the torsade day point. Valdecoxib produces the torsade day. So it produces the torsade day points type of arrhythmia, and Valdecoxib is a banned. Okay. Now Celecoxib is contraindicated in patient with allergic to the sulfonamides. Nimesulide has a hill nephrotoxicity. Nimesulide जो होता है naphthalic acid derivative होता है, and nowadays it is banned in almost all countries. In India also it is banned after 2012. It produces the hepatotoxicity and nephrotoxicity. Nephrotoxic करता है, hepatotoxicity भी करता है, and that's why it is banned in the many countries because of this prominent hepatic failure in the children up to 12 years of age. Next आता है आपका Raficoxib, Valdecoxib, they have been reported and associated with the risk, increase the risk of myocardial infarction and stroke. They has been withdrawn from the market from 2000. Paracoxib is a Paracoxib जो होता है, there is a prodrug of Valdecoxib. Topical Nsaids, those drug Nsaids, they are also having topical formulation of topically used Nsaids. So salicylic acid as a 6% ointment, 6% weight by weight ointment is used for a catalytic purpose. 3% ointment is also used. Diclofenac diethyl ammonium or diclofenac का बहुत सारे derivative है, so it is used as a diclogel for topically applying the joints and ligaments to deliver pain. Pyroxicam is also available 5% gel. Ibuprofen TMG gel. Ibuprofen is available in the eye drop. Okay. Ocular anti-inflammatory drug. Okay. Indomethacin is also available 1% weight by volume eye drops. Approximately 10% gel. Okay. Nimesulide is also having gel. Raficoxib is also having gel. 1% gel topically used. Now next is comparative study or comparison between all Nsaids. First was a aspirin. Aspirin is a very good analgesic, antibiotic and anti-inflammatory drug. Also it has a uricosuric effect, so it increases the uric acid excretion. इसका advantage इसका है, it has an antiplatelet activity even
at a low doses. Only 40 to 50 or 50 to 150 milligram dose is responsible for the antiplatelet. It is a powerful anti-inflammatory drug used as a analgesic in headache, backache, neuralgia, nerve pain, dysmenorrhea, pyrexia means increased temperature, rheumatic fever, rheumatic psoriatic pain, osteoarthritis. For its antiplatelet activity, aspirin is used in the prophylaxis of stroke, prevention of myocardial infarction. It is also used to closure the patent ductus arteriosus, used to delay the and used to delay the labor and also used it is used to delay the labor. These are the uses of aspirin. Next, paracetamol. So it is a good analgesic and antibiotic, but it has a poor anti-inflammatory and but it less produces the gastric irritation. Gastric irritation कम करता है. It is used as analgesic and antibiotic only. Next आता है आपका डाइक्लोफेनेक. Diclofenac analgesic, anti-inflammatory as well as antibiotic. So good concentration of this diclofenac is also found in the synovial fluid. So it is mostly used in the treatment of arthritis, gout, joint pains. Adverse effects are also less as compared to other. Chronic inflammatory conditions like rheumatoid arthritis, osteoarthritis, musculoskeletal pain, post-operative pain, ये post-operative fracture pain, fracture हो गया तो उसमें भी डाइक्लोफेनाक का ही इंजेक्शन देंगे, डाइक्लोफेनाक का ही टैबलेट देंगे, ओवेरान नाम का एक टैबलेट है, ओवेरान delayed release. Then pyroxicam, then it is analgesic, antibiotic and anti-inflammatory activity. So it is a longer acting once a day drug. एक बार देना है तो दिन भर काम नहीं. Less ulcerogenic. It will not produce ulcers. Less ulcerogenic. So again used in the arthritis, musculoskeletal pain and post-operative pain. Next है आपका phenylbutazone. So it has a good anti-inflammatory activity, analgesic activity and anti-pyretic activity. But it causes one problem. It causes the retention of fluid, water retention of fluid, and that's why it is contraindicated in the patient with the kidney problem, or it is contraindicated in the patient with the heart problem because it produces the edema. Right? So it is a powerful anti-inflammatory agent used in the rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and ankylosing spondylitis. नेक्स्ट होता है आपका इंडोमिथासिन. अगेन इट इज अ गुड एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग. टॉक्सिसिटी एज कंपेयर टू अदर ड्रग इज हाई. इंडोमिथासिन का टॉक्सिसिटी ज्यादा होता है. पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक used in the rheumatoid arthritis, psoriatic, osteoarthritic pain, gouty, ankylosing spondylitis, and to close the patent ductus arteriosus. Ibuprofen, analgesic, anti-inflammatory, antibiotic. All actions are less than aspirin, mild. Okay, adverse reactions are also mild than aspirin and better tolerated as analgesic in pain condition. Antibiotics, soft tissue injuries, fractures, post-operative pain, arthritis, gout, chronic papillitis, and periodontal abscesses. नेक्स्ट होता है कंपैरिजन बिटवीन एस्पिरिन एंड सेलेकॉक्सिब. एस्पिरिन क्या है आपको मालूम है, सेलेकॉक्सिब क्या है, सेलेक्टिव इनहिबिटर. You can see your chemistry. So aspirin is nothing but the salicylic acid derivative, okay, and non-selective COX inhibitor. It will inhibit COX1 as well as COX2. But celecoxib क्या है chemistry, इसका sulfonamide derivative and it is selective COX2 inhibitor. Okay. So aspirin has a potential to cause gastric ulcer. So this celecoxib has a less potential. इसका T आप aspirin का 2 to 3 hours है, इसका 6 to 12 hours है. तो aspirin is a short acting. This celecoxib is a longer acting drug. Risk of platelet function. So obviously aspirin inhibits the platelet aggregation. It does not have. Aspirin causes the Ray's syndrome, but celecoxib does not. Okay. Risk of thrombosis, clotting of blood, that will be prevented by aspirin, but celecoxib will cause the clotting of blood. So stroke and myocardial infarction करेगा. Cardiovascular toxicity, no significant. Cerebrovascular toxicity, no significant. It has a
risk of myocardial infarction and stroke. Using the myocardial infarction patient, obviously aspirin is recommended. It is used for the prophylaxis of myocardial infarction prevention. इसको यूज करेंगे, ठीक है. सिलिकॉक्सिब इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड. प्रोमिनेंट एक्शन क्या है उसका? एनालिसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीबायोटिक. एस्पिरिन का इसका भी क्या है? सेम. तो प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों भी इनहिबिट कर रहे हैं. जस्ट कंपैरिजन. नाउ ड्रग इंटरेक्शन विद एनएसएडी. कौन से ड्रग एनएसएडी के साथ में इंटरेक्शन करेंगे? सो फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन होता है. सो डायरेटिक ड्रग व्हेन दे आर गिवन विद एनएसएडी, there is a decreased diuresis activity. Beta blockers when given with NSAID, there is a decreased antihypertensive effect. So particularly they will decrease the effect of diuretics, antihypertensive and ACE inhibitors. Anticoagulant, there is an increased risk of GI bleeding when it is given with the warfarin or heparin. NSAID क्या करेंगे? उनको प्रोटीन बाइंडिंग साइट से हटा देंगे and there is increased risk of GIT bleeding. अल्कोहल के साथ में भी वही सेम प्रॉब्लम. इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ अल्कोहल जीआईटी ब्लीडिंग. साइक्लोस्पोरिन के साथ में एनएसआईडी विल इंक्रीज द नेफ्रोटॉक्सिसिटी. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सेलेक्टिव सोरेटिन रिएप्टेक इनहिबिटर जो है ये साथ में देंगे तो आगे जीआईटी ब्लीडिंग इंक्रीज करेंगे. फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन. ओरल एंटीकोगुलेंट, सल्फोनिलयूरियस, वेलप्रोएट, ये सब क्या है? दे आर हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग. सॉरी, दे आर they are highly protein bound drugs. There is a competition between plasma protein binding of NSAID with these drugs. Also, some of these drugs they are metabolic inhibitors. So, warfarin, valproate, they will inhibit the metabolism. That's why metabolism inhibited by competition. Digoxin, lithium, aminoglycosides, methotrexate, nitroglycerin. Okay. So, they decreases the renal excretion of interacting drug. एक्सक्रीशन कम कर देगा, टॉक्सिसिटी इनका बढ़ाएगा. बेनिफिशियल इफेक्ट ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन. ये जो एनएसएडी होते हैं क्या करते हैं? दे इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन. बेनिफिशियल इफेक्ट ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन. obviously they produce analgesia, antiviruses, anti-inflammatory effect, anti-thrombotic effect, closure of ductus arteriosus in the newborn. Due to inhibition of that PG synthesis, there are certain adverse effects. So shared toxicity due to prostaglandin inhibition. Gastric mucosal damage because prostaglandin is important for GIT. It is a protective nature. So it protects the GIT layer from acid. But due to inhibition of prostaglandin by Nsaids, so there is a gastric mucosal damage. Bleeding is there. Okay. Inhibition of platelet function. Limitation of renal flow. Delayed or prolongation of labor. Asthma and anaphylactic reaction in the susceptible individual. Because देखो जो अपन ने देखा था arachidonic acid is converted to prostaglandins and leukotrienes. So it only cyclooxygenase pathway is inhibited by NSAID. Arachidonic acid is still there. So arachidonic acid will not be converted to prostaglandin, but the accumulated arachidonic acid will be converted to leukotrienes and that will induce the asthma. एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनएसआईडी याद रखना है. एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है इसके? जीआईटी के ऊपर क्या है? नौशिया करेंगे. नौशिया मतलब मरना, एनोरेक्सिया मतलब भूख न लगना, गैस्ट्रिक इरिटेशन, इरोजन मतलब अल्सर करेंगे, पेप्टिक अल्सरेशन, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, परफोरेशन, इसोफेगाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेगस. रिनल एडवर्स इफेक्ट कौन से? देखो सोडियम वाटर रिटेंशन, क्रोनिक रिनल फेल्यूर, न्यूरोनेफ्रोपैथी, पेपिलरी नेक्रोसिस. कार्डियोवास्कुलर के ऊपर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर और मायोकार्डियल इंफेक्शन. स्पेशली कॉक्स इनहिबिटर्स क्या करेंगे? एरिथमिया प्रोड्यूस करेंगे, मायोकार्डियल इंफेक्शन करेंगे. नाउ इफेक्ट ऑन हेपेटिक लीवर के ऊपर रेज्ड ट्रांसअमाइनेज कौन करेगा? पैरास्टामोल. पैरास्टामोल इज लिवर टॉक्सिसिटी. देयर इज इंक्रीज्ड ट्रांसअमाइनेज लेवल बाय पैरास्टामोल. हेपेटिक फेल्यूर. सीएनएस के ऊपर मेंटल कंफ्यूजन करेंगे, वर्टिगो, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस, हेडेक, सीजर प्रेसिपिटेशन. ये बहुत ही कम बार करते हैं. हेमेटोलॉजिकल ब्लड के ऊपर क्या है? इट मे प्रोड्यूस ब्लीडिंग फॉर एग्जांपल विद एस्पिरिन, फेनिलबिटाजोल. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, ग्रैनुलोसाइटोसिस विद द फेनिलबिटाजोल. और अदर एडवर्स इफेक्ट क्या हो गए? अस्थमा करेंगे, रिनाइटिस, नजल पॉलीपोसिस,
rashes, pruritus and angioedema. एडवर्स इफेक्ट है NSAID. ड्रग इंटरेक्शन होता है NSAID तो ऑलरेडी अपन देखा है. एंटी रूमेटॉइड ड्रग अपन सेपरेटली चैप्टर लेंगे इसका. नेक्स्ट इज नथिंग बट द medicinal chemistry of same. Medicinal chemistry of NSAID is analgesic, antibiotic and anti-inflammatory drugs. So in the medicinal chemistry there are only few points, but I have to take it. I have to discuss about it. First we'll see the classification again. So classification of NSAID is salicylate मतलब salicylic acid derivative. So acetyl salicylic acid is known as aspirin, then methyl salicylate, sodium salicylate, okay, diflunisal, then benarylate. These are the examples. Okay. Second class में आएगा amino phenol derivative or analytes. Phenacetine is a prodrug of paracetamol. Paracetamol is also there. Okay. Then benarylate is also example. Benarylate is a prodrug of paracetamol as well as salicylic acid. Okay. Next class आता है आपका propanic acid derivative. So in that you have ibuprofen, phenylpropane, naproxen, okay, chlorpropane, etc. etc. Next class आता है आपका oxycams. In that you have meloxicam, lornoxicam, oxycam. In that meloxicam, paroxycam, lornoxicam. Then next class था aryl heterocyclic acetic acid derivative. तो इसमें दो तीन क्लास होता है. aryl heterocyclic acetic acid derivative इसमें पहला है indole acetic acid derivative. इसमें होता है indomethacin, sulindac and etorolac. These are the indole acetic acid derivative. You have to remember indomethacin. Indo देखो indo मतलब indole, C मतलब acetic acid, indomethacin, sulindac and etorolac. These are the indole acetic acid derivative. aryl acetic acid derivative उसमें आता है diclofenac, ketorolac and aciclovir. Diclofenac, ketorolac, aciclovir. They are aryl acetic acid derivative. In oxazole acetic acid derivative उसमें आएगा oxaprozine, oxaprozine. नेक्स्ट क्लास आपका आता है फेनामेट और एंथ्रानिलेट्स. फेनामेट और एंथ्रानिक एसिड में मेफेनेमिक एसिड, मेफेनेमिक एसिड एंड फ्लोफेनेमिक एसिड both are used in the dysmenorrhea, amenorrhea. नेक्स्ट आता है आपका पायराजोलन डेरिवेटिव. इसमें आएगा एंटीपायरिन, अमाइनोपायरिन, डायपायरोन. एंटीपायरिन, अमाइनोपायरिन, डायपायरोन. क्लासिफिकेशन एक बार और एक रिवाइज किया मैंने. नेक्स्ट और एक बार क्लासिफिकेशन देख लो. सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव इसमें एस्पिरिन, डाइफ्लूनिसल, सैलसेट. सैलसेट देखो यहाँ पे सैलसेट नाम का ये ड्रग है. So it is a dimer of your salicylic acid. मतलब it is dimer of aspirin. Aspirin का दो मॉलिक्यूल जोड़ दिया तो सैलिसिलिक बन गया. Diflunisal is a difluorinated phenyl derivative of salicylic acid. Sulfasalazine क्या है? Sulfasalazine is nothing but the again sulfonamide plus salicylic acid. So after breaking down of this sulfasalazine, sulfanilamide is released and salicylic acid is released. It is used in the ulcerative colitis. Okay, so aspirin, acetylsalicylic acid, diflunisal is nothing but difluorinated phenyl salicylic acid. Salicylate is nothing but the dimer of salicylic acid. Sulfasalazine is again a prodrug, is converted into sulfonamide as well as salicylic acid. याद रखना है. Next class आता है para-amino-phenol derivative. In that paracetamol, phenacetin we have discussed. Pyrazoline derivative in that phenylbutazone, oxybenzodazone, sulfenpyrazone. So oxybenzodazone क्या है? इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है phenylbutazone. sulfenpyrazone. Next आता है anthranic acid derivative, phenamic acid derivative और anthranic acid derivative और anthonycyclic derivative. टर्म ही गलत है. This is anthranic acid derivative or okay, phenamic acid derivative. So in that mefenamic acid, propionamic acid and mefenamic acid, propionamic acid and meclophenamate. Then fifth class आता है aryl alcoholic acid derivative और इसको बोलते हैं aryl acetic acid derivative. Diclofenac, okay, etodolac इसमें आता है. Aciclofenac, diclofenac, etodolac. Indole acetic acid derivative में आएगा आपका इसमें indomethacin. Indene acetic acid derivative में आएगा sulindac. तो कभी-कभी क्वेश्चन आता है which heterocyclic ring is present in the sulindac.
वहाँ पे आप इंडोल क्लिक कर देते हो, इंडोल नहीं है इसमें, इंडियन रिंग होता है, देखेंगे अभी। पायरोलैस्टिक एसिड डेरिवेटिव, ओके, that tolmetin and जोरपीपायरेट, जोरमीपायरेट, टोलमेटिन एंड जोरमीपायरेट। प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव में सब क्या आएगा, फेनोप्रोपेन, कीटोप्रोपेन, कीटो नहीं, आइबोपेन, डाइक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक इसमें नहीं आता, नेप्रोक्सेन, फेनोप्रोपेन एंड कीटोलेक, कीटोलेक is other. Oxycams, in that meloxicam, tanoxicam, lornoxicam, pyroxicam. Selective cost inhibitors, coxib, celecoxib, referoxib, valdecoxib, pitrocoxib. Gold compound, they are used as a used in the arthritis only and gold. So auro, okay, auronopin, okay, auronopin. तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है, auronopin is nothing but the a gold compound. Gold को ही बोलते हैं auro. Auro is the prefix for gold. Aurothioglucose, aurothioglucanide. इसमें इस कंपाउंड में आता है न्यूक्लियोसाइड नेपोमोटम अनाल्जिन, एंटीगोट ड्रग में आएगा एलोपेरिनॉल प्रोपेनिसिलिन सल्फेनपाइराजोल. So we are not going to see anti-gout drug today. Anti-gout drug will be discussed separately. Okay? We are only seeing the Nsaids. Okay? ये क्लासिफिकेशन बहुत बार हो चुका है. You can see over here salicylic acid. So salicylic acid का स्ट्रक्चर क्या है, एक बेंजीन रिंग है ना, उसके अटैचमेंट क्या है, एक COH and OH. So with the 2-hydroxybenzoic acid. 2-hydroxybenzoic acid is nothing but the salicylic acid. How it is synthesized? How there is synthesis of aspirin. Okay. So benzoic acid, 2-hydroxybenzoic acid or salicylic acid, it is a treated with the acetic anhydride. In presence of acetic acid, you will get 2-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxybenzoic acid, known as acetyl salicylic acid. तो अपन salicylic acid बोलते हैं, acetyl salicylic acid. salicylic acid डेरिवेटिव में अटैचमेंट कहाँ पे, यहाँ पे कुछ अटैचमेंट कर सकते हो आप, यहाँ पे कुछ, तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सोडियम एस्पिरिन और 2-hydroxybenzoic एसिड ऑलरेडी देखा है. नाउ सार ऑफ सैलिसिलेट, सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, क्या क्या कहाँ पे, देयर इज नो, देयर आर नॉट लॉट ऑफ पॉइंट्स, ओनली 2-3 पॉइंट्स आर देयर. So substitution on carboxylic group resulting to change in the potency as well as toxicity. यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो दैट डिक्रीजेस और दैट चेंज इन द पोटेंसी एज वेल एज टॉक्सिसिटी. जैसे सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट इज अ मोर टॉक्सिक देन सैलिसिलिक एसिड और एस्पिरिन. ओके, OH ग्रुप एट मेटाबॉलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्शन. ये ग्रुप इंटैक्ट होना चाहिए. So OH group at metabolism is important for action. Benzoic acid is weaker than salicylate, but it has many actions of salicylic acid. Benzoic acid जो होता है सिर्फ only बस उतना ही उसको, it has a weak action than salicylic, but has actions of salicylic acid. Complex salt of salicylic acid with the choline. choline जो बेस होता है आपके बॉडी में, उसका कॉम्प्लेक्स बनाया salicylic acid का. And magnesium, which has a longer duration of action, less gastric irritation than aspirin. For example, is a triacylate. Trilysate is nothing but the it is a complex of salt of salicylic acid with the choline. Trilysate. Okay. N acid N acidic aminophenol. N acidic aminophenol ester of aspirin gives the prodrug. ठीक है, मतलब देखो कोलिन सैलिसिलेट, यहाँ पे जो COH ग्रुप है यहाँ पे कोलिन लगा दिया, कोलिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, कोलिन सैलिसिलेट, इट हैज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. नेक्स्ट क्या है, N एसिडिक अमाइनोफेनॉल डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अमाइनोफेनॉल, यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया पैरास्टामोल, तो बन गया बेनोलिन. फॉर एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर, तो चलो बेनोलिन. सो ये एस्पिरिन, ये देखो एस्पिरिन, यहाँ से एस्पिरिन है, इतना पार्ट एस्पिरिन है, ये इतना पार्ट क्या है, पैरास्टामोल. N acidic aminophenol ester of aspirin is also active and it is a benzoyl. It is a prodrug of aspirin as well as, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, बनेगा पैरास्टामोल और यहाँ पे बनेगा 5-2,4 difluorophenyl or difluorobenzyl salicylic acid is also introduced in the clinical use known as a dietphenol.
डाइफेनिल का है। देखो इसको बोलेंगे कार्बन नंबर 1 है ना, कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, सो 5 इंटू, इसके अंदर गया 5 इंटू 2,4 डाई फ्लोरो। देखो यहाँ पे इसको 1 बोलो, ये 2 2,4 डाई फ्लोरोबेंजील और 2,4 डाई फ्लोरोफिनाइल salicylic acid, it will give you diaphonism. Two salicylic molecule or two salicylic acid molecules, if they are combined together, you will get a one, okay, on a prodrug known as salicylate. Salicylate is nothing but the combination of two acid, combination of two salicylic acid molecule. यहाँ पे एक salicylic acid का molecule है, it is the prodrug of salicylic acid. Hydrophobic group at a fifth position of acetyl salicylic acid. हाइड्रोफोबिक ग्रुप अगर डाल दिया आपने at the fifth position of salicylic acid, it becomes more potent and long lasting with the less gastric irritation. For example, प्रोनिसा, यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर ये फिफ्थ पोजीशन है, ये यहाँ पे क्या डाल दिया, पैरा फ्लोरोबेंजीन, that is a hydrophobic group. So hydrophobic group, introduction of hydrophobic group at a C5 of salicylic acid, C5. So it is a more potent compound and longer lasting. That is the SAR of your salicylic. Simple है. Are you getting or not? समझ रहे हैं आपको? समझ तो आएगा. Okay. नेक्स्ट है आपका पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव, उसका सार, पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव. तो देयर आल्सो नोन एज, यहाँ देखो क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं. सो पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव और पैरासिटामोल, दे आर आल्सो नोन एज कोल टार एनालिसिस. क्या बोलते हैं इनको? कोल टार एनालिसिस. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कोल टार एनालिसिस. Phenylalanine is nothing but the prodrug of paracetamol, and these drugs are analgesic antibiotic property, but do not have anti-inflammatory. They are less anti-inflammatory. SAR of para-aminophenol derivative. इनके लाइफ का SAR. Phenol group is phenol group etherification. Etherification of phenol group with methyl propyl use compound with a greater side effect than ethyl derivative. यहाँ पे ये जो इथाइल है ना, ethyl derivative of this paracetaminophenol. Ethyl derivative of paracetaminophenol known as a phenylalanine. That the first drug. So if you replace this ethyl group with the methyl propyl gives compound greater adverse effect. वो ethyl की जगह propyl डाल दिया तो ज़्यादा adverse effect हो जाएगा. इसको ही already adverse effect है. That's why it is no more. तो इसका ब्रेकडाउन होकर बॉडी में क्या बनेगा, पैरासिटामोल. तो देखो पैरा, ये क्या होगा, इतना इतना जो है फिनॉल है, फिनॉल, तो उसकी पैरा पोजीशन पे क्या है, एस्टामिडो, CH3CONH, एस्टामिडो, पैरा एस्टामिडो फिनॉल, दैट इज आईयूपैक नेम. नाउ एसिटानिलाइड, substitution of nitrogen which reduces the basicity also reduces the acidity unless substitution is metabolically labile. Example, acetic group. Substitution on nitrogen, those substitution which reduces the basicity, they also reduce the acidity unless substitution is metabolically labile for acetic group. यहाँ पे अगर कुछ करेंगे वो ब्रेकडाउन होना चाहिए. That should release at least paracetamol. So like benarylate and other, like other drugs. N-phenylbenzamide. N-phenylbenzamide is less active. Amide derivative from aromatic acid. They are also less active. Metabolism of paracetamol. PCM मतलब paracetamol. So this paracetamol is metabolized by, it is metabolized by two reactions. First, 60% of paracetamol is metabolized by glucuronide conjugation. यहाँ पे glucuronic acid attach हो जाएगा 4 पोजीशन में. So glucuronide conjugation and this will be removed. Then paracetamol, there might be chance of sulfate conjugation. sulfate का भी conjugation हो सकता है. And 40% paracetamol is metabolized by
glutathione conjugation. So there is a, if you take paracetamol beyond 6 gram, there is a one toxic metabolite formation known as a, okay, N-acetyl para-hydroxy benzoquinone. So N-acetyl para-hydroxy, N-acetyl para-amino benzoquinone imine, NBQI. This is toxic metabolite. N-acetyl para-benzoquinone imine. Toxic reaction with the proteins and nucleic acid of the hepatic cell. So that is conjugated with the glutathione. यहाँ पे glutathione conjugation हो जाएगा. Now it is removed. But in the paracetamol poisoning, due to higher dose of paracetamol, your glutathione level of your body is limited, and that's why it causes the hepatotoxicity. Antidote is nothing but the N-acetylcysteine, N-acetylcysteine or methionine. Antidote होता है उसका, ये तक है. So you have to remember there are two antidotes. Okay. Next is nothing but the प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव. इसमें आता है आइबुप्रोपेन, नेप्रोक्सेन वगैरह. ठीक है. तो आइबुप्रोपेन का आईपैक नेम इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइबुप्रोपेन. आइबु, आइबु मतलब क्या? ब्यूटाइल ग्रुप. प्रो मतलब क्या? प्रोपिनिल ग्रुप. ठीक है. देखो आइबु, आइबु मतलब ब्यूटाइल ग्रुप, ब्यू मतलब ब्यूटाइल ग्रुप, प्रो मतलब प्रोपाइल ग्रुप, फेन मतलब फेनाइल ग्रुप. तो आइबुप्रोपेन उसमें क्या क्या रहेगा? फिनाइल ग्रुप रहेगा, फिनाइल रिंग रहेगा. ठीक है. प्रोपेनिल ग्रुप रहेगा और उसमें क्या रहेगा? ब्यूटाइल ग्रुप. ठीक है. देखो 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल. देखो ये क्या है पूरा? 2 इंटू 2 आइसोब्यूटाइल, ये क्या है? 2 आइसोब्यूटाइल. इसको प्रोपेनिक एसिड बोलते हैं. तो प्रोपेनिक एसिड कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, प्रोपेनिक एसिड 2 इंटू 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपेनिक एसिड. तो ये आईपैक नेम है उसका, अब आइबुप्रोपेन. So 2 into 4 isobutyl phenyl propanic acid. That is IUPAC name of ibuprofen. So out of that, ibuprofen is nothing but the racemic mixture. It is the equal amount of ES and R isomer. So out of that, ES isomer is active, R is not. R isomer active नहीं होता, ES isomer active होता. It is supplemented in the form of racemic mixture. Then 5-pyrazoline derivative. Next होता है 5-pyrazoline derivative. In that you are going to your aminopyrin, antipyrin, aminopyrin, dipyrin. Aminopyrin is a parent drug and no longer used. Aminopyrin used नहीं किया. Chemically, aminopyrin is a N-phenyl N alkyl substituted pyrazoline 3-1. देखो नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे. So 1,3 nitrogen, 1,3 nitrogen in a 5-member ring known as a pyrazole. Pyrazole, pyrazole 2,3, sorry pyrazole 3-1. देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे. पायराजोलन, ये नाइट्रोजन 5 की जगह यहाँ पे 3 है, ये नाइट्रोजन 1 2. तो पायराजोलन, पायराजोलन 3-1 इसके डेरिवेटिव. सो पहला आता है एंटीपायरिन. एंटीपायरिन, एंटीपायरिन में यहाँ पे C2 जो है, C2 मतलब ये, सॉरी R2, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन. ओके, दिस इज अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर योर पायराजोलन डेरिवेटिव. ये स्ट्रक्चर जो है ना वो कॉमन है. So if methyl group is there in this known as antipyrin, if methyl group is there plus यहाँ पे क्या है? डाइमिथाइल अमीनो, that will become aminopyrin. aminopyrin क्यों बोलेंगे? डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप. एंटीपायरिन क्यों बोलेंगे? इसमें से मिथाइल. डाइपायरोन क्यों बोलेंगे? डाइपायरोन बोलेंगे इसमें दोनों है, यहाँ पे मिथाइल भी है, यहाँ पे डाइमिथाइल अमीनो भी है, प्लस सोडियम सल्फर, सोडियम सल्फर डाइमिथाइल अमीनो, मिथाइल सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट, डाइपायरोन. देन नेक्स्ट आता है 3,5-pyrazoline डेरिवेटिव. 3,5-pyrazoline, यहाँ पे 2 कीटोन आएगा. 1 2 3 और डाई कीटोन. 3 के ऊपर कीटोन है, 5 के ऊपर कीटोन है.
तो 3,5 पायराजोलोन डेरिवेटिव इसमें आएगा फिनाइलबिटाजोन, ऑक्सीपेनबिटाजोन एंड सल्फेनपायराजोन। तो फिनाइलबिटाजोन ओके, सो R2 यहाँ पे क्या है फिनाइल लेंगे R2, देन R4 पे क्या है यहाँ पे प्रोपाइल है एन ब्यूटाइल, यहाँ पे एन ब्यूटाइल, दैट्स व्हाई फिनाइल ब्यूटा, ब्यूटा मतलब क्या है ब्यूटाइल जोन, जोन के लिए पायराजोलोन डेरिवेटिव फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल ब्यूटाजोन में क्या है एक फिनाइल रिंग एक्स्ट्रा है प्लस ब्यूटा, ब्यूटा मतलब एन ब्यूटाइल ग्रुप है यहाँ पे C4 के ऊपर, एंड बाकी जो 3,4 पायराजोलोन स्ट्रक्चर है वो कॉमन है। 3,4 पायराजोलोन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इट इज अ पेरेंट स्ट्रक्चर, ये तो कॉमन है। बाद में इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन एंड यहाँ पे एक, अगर यहाँ पे फिनाइल लेंगे बेंजीन और यहाँ पे एन ब्यूटाइल ग्रुप है दैट विल बिकम फिनाइल ब्यूटाजोन। ऑक्सीपेन ब्यूटाजोन में क्या है डिफरेंस कुछ भी नहीं, क्या डिफरेंस है यहाँ पे जो रिंग होता है बेंजीन उसकी पैरा पोजीशन पे क्या आएगा हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे जो बेंजीन है फिनाइल ब्यूटाजोन में इसकी पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट्स व्हाई फिनाइल ब्यूटाजोन इज अ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ ऑक्सीपेन ब्यूटाजोन इज अ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फिनाइल ब्यूटाजोन। सो ये फिनाइल ब्यूटाजोन बॉडी में जाके वहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है उसका, डिहाइड्रोजनेशन, वो OH बन जाएगा, बाकी तो सेम ही है। सल्फेन पायराजोन में क्या है बस एक ही डिफरेंस है, बस यहाँ पे है CH2 CH2SO2 C6CH2 यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या है CH2SO C6H2 सल्फेट ग्रुप है सल्फेन पायराजोन। 3,5 पायराजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव, इसमें फेनिलबिटाजोन आएगा, ऑक्सीपेनबिटाजोन, सल्फेन पायराजोन। To remove the adverse effect of n-butyl group of phenylbutazone, n-butyl group जो था phenylbutazone में उसकी वजह से उसको एडवर्स इफेक्ट, जैसे एक ग्रेनुलोसाइटोसिस, न्यूट्रोपेनिया, बोन मैरो सप्रेशन, so butyl group is replaced by CH2OSO2 C6H12. There is increased analytic activity and uricosuric activity in case of sulfine pyrazone. Phenylbutazone is metabolized to gamma hydroxyphenylbutazone and oxyphenylbutazone, which is less toxic than SAR of 3,5 pyrazolidine diones. The replacement of nitrogen with oxygen atom in pyrazolidine dione ring gives isoxazole analog, which are equally active than diaparental. यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो रिमूव करो, उसके ऊपर ऑक्सीजन डालो, it will replace this nitrogen, one nitrogen with oxygen, it will become oxazole, right? एक नाइट्रोजन रिप्लेस किया ऑक्सीजन से तो बनेगा ऑक्साजोल, तो ऑक्साजोल डेरिवेटिव इज आल्सो इक्वली पोटेंट इन 3,5 pyrazolidine diones. Activity is related to acidity, carbonyl function at C5, C5 and C3, ये जो carbonyl function है दोनों enhances the acidity of hydrogen atom at C4, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आटम उसका एसिडिटी बढ़ाते हैं, and decreased or removed of acidity, decrease or removal of acidity diminish the anti-inflammatory, तो ये कीटोन ग्रुप जो है दो 3,4,5 डाइकीटोन, so it is very important for activity. If acidity value is increased too much, उसका acidity value बहुत ज़्यादा increase किया किसका, वही 3,5 pyrazolidine derivative, it decreases the anti-inflammatory activity and sodium retention property, but uricosuric property is increased. acidity value increase हो गया या ये हाइड्रोजन का, तो क्या होगा एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, सोडियम रिटेंशन प्रॉपर्टी, ये क्या होगा डिक्रीज होगा, बट यूरिकोसोरिक प्रॉपर्टी क्या होगा इंक्रीज होगा. Keto group in the gamma position of butyl side chain use active compound. Addition of polar groups in the side chain of gamma hydroxyl and butyl has a great uricosuric activity, but anti-inflammatory activity is decreased. Keto group जो है ये this is alpha hydrogen, beta, gamma. So keto in a gamma position of butyl side chain, ये जो butyl side chain होता है अल्फा हाइड्रोजन होगा, बीटा गामा डेल्टा, ऐसा यहाँ पे इधर बढ़ता जाएगा, कीटोन के नजदीक वाला जो है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, बाद में बीटा गामा डेल्टा. So keto group in the gamma position of butyl side chain give active compound.
Addition of polar groups in the side chain of gamma hydroxy N butyl has a great uricosuric activity, but anti-inflammatory activity is decreased. Both phenyl rings, okay, both phenyl groups are not important for either analgesic or anti-inflammatory. जैसे phenylbutazone में क्या है यहाँ पे R2 में phenyl group है. Both phenyl group are not important for either analgesic or anti-inflammatory. 2-phenyl or thioethyl group at C4. 2-phenyl, okay, 2-phenyl or thioethyl group at C4 gives anti-gout activity. For example, sulfenpyrazole. Meta substitution on phenyl of phenylbutazone leads to active compound like para substitution like chlorine, nitro or OH returns the activity. यहाँ पे जो फिनाइलिंग है इन केस ऑफ phenylbutazone उसकी मेटा पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशन कर दिया that is inactive, okay, that is inactive, but para position पे डाल दिया that will retain the activity. You guys are of 3,5-pyrazole derivative. Phenamate or phenamic acid derivative or anthranilic acid derivative. Replacement of phenolic group of salicylic acid by aryl substitution of substituted amino group will give you isosteres of aryl ether of salicylic acid, mefenamic acid and propionamic acid. They are the example. क्या बोला है रिप्लेसमेंट ऑफ फिनोलिक OH. ठीक है, यहाँ पे जो OH था सैलिसिलिक एसिड में, देखो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, इतना है. OH मतलब सैलिसिलिक एसिड होगा. तो रिप्लेसमेंट ऑफ दैट OH फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड बाय अराइल सब्स्टिट्यूटेड अमीनो ग्रुप. अराइल सब्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पे अभी क्या बन गया, अराइल सब्स्टिट्यूटेड अमीनो ग्रुप. give you isosteres of aryl ether of salicylic acid. So that is known as either mefenamic acid, propionamic acid, or meclofenamic acid. Derivatives are there in class. इनमें इसका सार क्या है? सार ऑफ एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव. Position of carboxyl group is important. Other derivative like 3,4 amino benzoic acid are inactive. मतलब ये जो है पोजीशन इसका वो इसको is important. This is replaced over here. यहाँ पे डाल दिया that are inactive. Carboxylic function can be replaced by isosteric tetrazole. एक बार यहाँ पे tetrazole का नाम आ गया तो क्वेश्चन बताओ. There was once a question in the exam GPAT. What is the isosteric replacement of carboxylic group? Isosteric replacement of COH group क्या है? आंसर है tetrazole without affecting the activity. Any substitution on anthranilic ring decreases the activity, but N-aryl ring order of activity. Okay? Any substitution on antranilic ring मतलब ये ring decreases the activity. Tertiary, secondary, primary. Upon mono substitution, opposite order of activity was seen in the. ठीक है, ये raw POA edema वगैरह. So if you want to check the anti-inflammatory activity, तो इसमें माइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेमेशन करते हैं. से फॉर एग्जांपल उसका जो पंजा होता है माइस का उसमें इंजेक्शन देना पड़ता है. तो जैसे आपका carrageenan is a polysaccharide when it is injected it will improve the inflammation. Carrageenan induced a POA edema. This is one of the model for checking the activity of anti-inflammatory. So any substitution on anthranilic ring decreases the activity, but N-aryl ring in order of tertiary, then secondary, then primary. Okay. Upon mono substitution with this trifluoromethyl group, use the more potent compound known as a propionamic acid. This is the structure of propionamic acid. पहला जो structure है it is mefenamic acid का structure पहला. We'll explain this. 2 into 2,3 dimethylphenylamino benzoic acid. So mefenamic acid means what? Okay, this carbon is known as a 1
and this carbon is known as 2. 2 into क्या है देखो, 2 into ये सब है, तो यहाँ पे अगेन 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, 2 into 2 3 मिथाइल डाइमिथाइल अमाइनो डाइमिथाइल फिनाइल अमाइनो डाइमिथाइल फिनाइल अमाइनो बेंजोइक एसिड, तो मेफेनेमिक एसिड का अल्पेट नेम। और फ्लोफेनेमिक एसिड का अल्पेट नेम क्या होगा, तो यहाँ पे 2 into 2 3 डाइमिथाइल फिनाइल की बजाय यहाँ पे 2 into 2 मिथाइल 3 ट्राइफ्लोरोमिथाइल, 2 into 2 मिथाइल 3 into ट्राइफ्लोरोमिथाइल फिनाइल अमाइनो बेंजोइक एसिड, ये हुआ आपका फ्लोफेनेमिक एसिड का अल्पेट नेम। नेक्स्ट आता है मेक्लोफेनामेट। मेक्लोफेनामेट इसमें 2 into 6 ट्राइक्लोरो 3 मिथाइल फिनाइल अमाइनो बेंजोइक एसिड, 2 into 2 6 ट्राइक्लोरो, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 into 2 6 ट्राइक्लोरो, ये कार्बन नंबर 1, ये 2 3 4 5 6, 2 6 ट्राइक्लोरो 3 मिथाइल फिनाइल अमाइनो, बाद में ये क्या है पूरा बेंजोइक एसिड, तो मेक्लोफेनामेट। लास्ट पॉइंट इसमें, इन द डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव same substitution at a 2 3 is more equal to mefenamic acid. It is amino moiety of anthranilic acid is essential for activity. ये जो है ये anthranilic acid का ये जो पार्ट है important है और essential for activity. Replacement of it by other groups like oxygen, methyl, sulfur, sulfate, amino methyl, ठीक है, then acetone decreases the activity. Good evening sir. हाँ बोलो सर. हाँ हेलो सर. हाँ गुड इव्हनिंग सर. आता जस्ट प्रिन्सिपल सरांचं कन्फर्मेशन आलं. बरं. काय असेल परवाला करून टाकू. चालेल ना सर, काही अडचण नाही. म्हणजे नांदेडलाच ना लोहाला. आणखी सर एखादं कॉलेज जर भेटलं तर खूप चांगलं होईल तुमच्या परिचयाचं. मॉर्निंगला आपलं ठेवा सर. चालेल ना, मॉर्निंगला आपल्याला करू. मी काय करेल सर, परभणीवरनं उद्या 2 कॉलेज सेशन करून नांदेडलाच येऊन थांबेल. स्टे करणार आपलं लोहा बाहेर असल्यामुळे कसं आहे, मॉर्निंगला आपलं करून घेऊया आणि नंतर मग दुपारी तुम्ही नांदेडला गेला तर नांदेड दुसरं कॉलेज सांगतो माझं वापरता. चालेल सर, दुसरं कॉलेजचं नाही आणखी काही कन्फर्म नांदेडचं, मला प्लीज एक कॉलेज करून द्या. सर आपली काही दुसरी काही रिक्वायरमेंट असेल? दुसरी काही नाही सर, आपल्याला प्रोजेक्टर लागेल सर, प्रोजेक्टर किंवा आणि माईक जर असेल तर चांगले. हो आहे, आपलं सर सेकंड फ्लोअरला क्लासरूम आहे. अच्छा, लिफ्ट वगैरे आहे का? लिफ्ट आहे ना सर आपल्या कॉलेजला. चालेल ना, मुलं असतील तर मुलं पकडतील, थोडंसं हेल्प करतील चेअर उचलायला. चालेल सर, काही विषय नाही. अवघड जाऊ नाही, मला नाही सर, मी आता मला प्रॅक्टिसच आहे, भरपूर कॉलेजला लिफ्ट नाही तर करावंच लागतं. चालेल सर, मुलं असेल तर हेल्प होऊन जाईल, काही विषय. थँक्यू सर. आपण अरेंजमेंट कशी करूया. हो, सकाळी 10ला सेशन स्टार्ट होईल अशा प्रकारे परवाला. चालेल सर, काहीच विषय नाही. थँक्यू सर. तर काय मास्तरला वजा फोन उचला लागतं बाबा, काय त्यांचा फोन नाही उचलला त्यांना विचारलेलं लागतं मग, कारण ते पीएचडी झाले असतात. माझा फोन नहीं उचलला, मैं जयकांत सिकरे रही, वो बोलता है फिर मैं जयकांत सिकरे, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का, इसलिए उनको बुलाना पड़ता है. Then pyral acetic acid derivative, pyral acetic acid derivative. In that tolmetin is there, tolmetin. So tolmetin, tol for toluene, यहाँ पे for toluene है. फिनाइल एसिटिक एसिड, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इफेक्ट नाम आपको, स्टिल मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे टोलमेटिन, ठीक है. 2 into 1 मिथाइल 5 4 मिथाइल बेंजाइल 1 पायरल एसिटिक एसिड. ये जो कार्बन नंबर है नाइट्रोजन वाला, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2. 2 into क्या है 1 मिथाइल, 2 into 1 मिथाइल, ये 1 मिथाइल 5, ये 1 है 2 है, 2 into 1 मिथाइल बेंजाइल, ये 5 मिथाइल बेंजाइल, ये 5 मिथाइल बेंजाइल, इसको कार्बन नंबर 1 बोलेंगे. इसको 1 मिथाइल 5 into 4 मिथाइल बेंजाइल 1 डायड्रोपायरॉल 2
एसिटिक एसिड CH3 CH2 COOH. टोल मेथिल 2 into 1 methyl 5 into 4 methyl benzoyl, ये 5 into 4 methyl benzoyl, यहाँ पे 1 है, ये 4 आएगा, ये कार्बन है 5, ये 5 है, 5 into 4 methyl benzoyl pyrrole 2 acetic acid, so टोल मेथिल. नेक्स्ट होता है जोमी पायरेट. जोमी पायरेट का भी वैसा ही, देखो 2 into 5 into 4 क्लोरोफिल, यहाँ पे 2, ये 2 है, 2 into क्या है ये सब, 2 into 5 into ये 5 into क्या है 4 क्लोरोफिनाइल बेंजोइल पायरोल, ये वो आपका जोमी पायरेट. जोमी पायरेट देन इलेक्ट्रोकॉक्स 2 इनहिबिटर आता है. इलेक्ट्रोकॉक्स 2 इनहिबिटर यहाँ पे देखो, इसमें रिंग कौन सा है याद रखो, यहाँ पे देखो सल्फोनिलमाइड, ये क्या है पायरेजोली, पायरेजोल, पायरेजोल, पायरोल मतलब एक ही नाइट्रोजन इन द 5 मेंबर, दो है तो पायरेजोल. पायरेजोल ने आइसोक्सापाइल ओके. आईपैक नेम छोड़ो, उसका कोई दिक्कत नहीं, किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा. इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेलेकॉक्सिक, सेलेकॉक्सिक. तो 4 into 5 into 4 में देखते हैं, देखो का 1 2 ब्रोमाइड, ये बेस लिया, तो छोड़ो, इसका कोई आईपैक नेम का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जितना देखो इन द कॉक्सिक सेलेकॉक्सिक, so pyrazole ring is there, sulfonamide is there. In the rofecoxib, it is the most potent among the coxib. So you have again this ring, etocyclic ring. One is a furan 2-1. ये 1 है, ये 2 है. Furan 2-1 means furanol. And in case of valdecoxib, you have isoxazole. Isoxazole. Next आएगा आपका oxycams. This group represent the N-aryl carboxamide of 4 hydroxy 1,2 benzothiazine 1,1 dioxide is a pyrazine. तो देखो N aryl carboxamide, carboxamide benzothiazine, N aryl carboxamide 1,2 benzothiazine 1,1 dioxide, ये benzothiazine है, सल्फर benzothiazine, सल्फर प्लस नाइट्रोजन, एंड इसको 1 बोलना है, इसको 2 बोलना है, 1,1 डाइऑक्साइड 4 हाइड्रोक्सी 1,2 benzothiazine 1,1 ऑक्साइड, N aryl carboxamide, N aryl carboxamide CONH, pyrazine. So pyrazine क्या है, N aryl carboxamide 4 hydroxy 1,1 benzothiazine 1,1 dioxide, pyrazine. Initially isoquinoline carboxonilides, isoquinoline carboxonilides similar to, so similar anti-inflammatory potency like phenylketonuria. Initially these compounds were synthesized which was having similar activity with the phenylketonuria, phenylketonuria, increase the acid property of cyclic by cyclic beta diketones. Cyclic beta diketones was the main important feature of these compounds for biological activity. For example, Tesicam. इसका Tesicam का structure यहाँ पे नहीं है. Chlorine substitution at a para position of phenylene, the Tesicam increases the half-life as the life duration. Pseudoxycam is more potent and longer acting than Tesicam, prepared as a isomeric carboxamide 4-hydroxy 2 dihydro 1,2 benzothiazine 1,1 dioxide. Further research to synthesize the pyrazine was the half-life. तो pyrazine बाद में आया, उसके पहले टेसिकम आया था, उसके बाद पहले टेसिकम आया था, pyrazine बाद में. Pyrazine has the longest duration of action याद रखना है. It is used once a day. Diclofenac is a aryl acetic acid derivative. aryl acetic acid. This is sodium salt of diclofenac. Sodium को देखो तो यहाँ पे COH, aryl मतलब benzene acetic acid CH2COH, aryl acetic acid derivative. तो डाइक्लोफेनाक का आईपैक नेम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो. डाइक्लो मतलब डाइक्लोरोफेनाक. तो 2 into 2 into 2 6 डाइक्लोरोफेनाइल अमीनो phenyl acid.
इन द इसको 1 बोलने का है, इसको 2 बोलने का है, 2 इंटू क्या है, इसको 1 बोलने का है, इसको 2 बोलने का है, 2 इंटू 2 2 4 डाइक्लोरोफिनाइल अमाइनो फिनाइल एसिटेट। बाकी अवरोधायोग्लूकोज जो है दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। तो ये छोड़ो, ग्लूकोज में सिर्फ क्या लगा दिया, यहाँ पे गोल्ड लगा दिया, इस अवरोधायोग्लूकोज अवरोफिन गोल्ड कंपाउंड दे आर यूज्ड इन द arthritis treatment. In this compound, gold is directly attached to sulfur, and therefore they act by inhibiting the vital sulfide system of your body. Gold accumulated in the lysozyme and inhibit the activity of acid phosphatase, beta glucuronidase, and cathepsin enzyme, which has a catalytic role in the various inflammation and disorder. तो ये जो enzymes होते हैं, 3-4 enzymes, ये enzymes क्या करते हैं? They has an important role in the like acid phosphatase, beta glucuronidase, and cathepsin. They have a role in the various inflammation and disorders like arthritis and rheumatoid arthritis, gout meaning arthritis. That's why gold compounds they are effective in the arthritis. एडवर्स रिएक्शन क्या होंगे इनकी? ऑब्वियसली इसमें क्या है, मेटल है तो ये किडनी टॉक्सिक है. दिस कंपाउंड कॉजेज फिटनेस रिएक्शन लाइक एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकोपेनिया, agranulocytosis, thrombocytopenia, hepatitis, peripheral neuritis, contraindicated in case of hepatic and renal failure. D-penicillamine is leading in D-isomer is used in the treatment of rheumatoid arthritis. L-penicillamine is having adverse effect like kidney and antiviral activity. पेनिसिलामाइन क्या है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ, जो पेनिसिलिन है उससे ही बनता है पेनिसिलामाइन. बट डी पेनिसिलामाइन इज अ आयन चेलेटर used in the rheumatoid arthritis. It is a metabolic metabolite of penicillin and it has a structural resemblance to cysteine. Due to high toxicity, it should not be used frequently or long term. Other agents in the, because we are going to see that chapter separately. तो antidote drugs में एंटीमिलियन ड्रग आता है, क्लोरोक्विन यूज करते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स यूज करते हैं. तो अपन वो बाद में देखेंगे.